लास्ट पार्ट में अल्ट्रा वायर्स तक एक केस मार्क करके रखो, कन्हैया लाल वर्सेस केस पेज नंबर 10. पे भरत इसमें that one of the object was to advance money at the security of houses properties. It complete several have been paid by the company without adequate security and contrary हम proper जानकारी के investments has affected the company. तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने all matters of management company, best judge of its affairs and the company. Sorry, the court should not. But assets of the company is not a matter of internal matter. Directors are acting ultra vires the funds of the cost was supported by except cost was supported by super member can maintain this case. Why? Because if the act is ultra vires the memorandum, ultra vires the then the single member has all the right to make. Interesting case है याद रखना cost was supported points लिख ultra vires का contribute. Ultra vires दूसरा केस that is called Menio versus was observed that it talking thing that majority of holders are allowed something in pockets. In this case, majority of the shareholders of faster
minor company shareholders majority company or government government bid किया अब हुआ क्या और कंपनी कंपनी majority कंपनी shareholder कंपनी भी सेम पर हुआ रेजोल्यूशन पास की से विड्रॉ कर मेजॉरिटी वालों ने कर लिया ये था चैलेंजिंग पार्ट कंपनी majority शेयर होल्डर ऐसा है कि जो पापा कंपनी एंड पापा कंपनी पहले बिड किया when they found out you have also bid it तो पापा कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग बिड विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ है कि कंपनी ए ने क्या किया देयर इज अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय majority withdraw bid allow company get opportunity कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे वो इस बात से भड़के कि आप लोग तो इधर नहीं तो उधर दूसरी कंपनी में कमा लोगे तो कंपनी का डीवैल्यू हो डीवैल्यू कंपनी हमको तो उन्होंने रेजोल्यूशन दैट इज challenges कि सर ये क्लियर कट फ्रॉड ऑन दिस इज अ फ्रॉड ऑन एंड yes it is के इस जज से कंपनी का ये जो रेजोल्यूशन
per se illegal. Yeah, that is shopping allowed to give. Yeah, there was a case of though there clear difference on both sides in a the court decides on a particular according to the side with of fraud or money. There are resolutions for the benefit. Alan was आपको दोनों में से लग रहा है काफी wrongdoers in wrongdoers words was jump start. कई बार the reason of this right of action. The wrongdoers themselves control level of तो अगर कंपनी में गलत काम करने वाले ही उसके क्वालिटी का केस पड़ेगा. Glass was glass was settling company by two days and fraudulent alleging that they fraudulent for their private use. Now the action so with where where it had it. Since the two defendants control the company, they assess the wrongdoer.
इस ऐसे दो साइड समझो परसेंट शेयर्स पास डायरेक्टर वन यहाँ पे डायरेक्टर वन इधर और यहाँ पे डायरेक्टर टू। और हुआ क्या, केस ऐसा है कि कंपनी का एक डायरेक्टर पूरी तरह कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। लेट्स सपोज इमेजिनेशन बिल्ड करते हुए ये डायरेक्टर जो डिफेंडेंट है, केस ऐसा है कि कंपनी प्रॉपर्टी इज मेड फॉर प्राइवेट यूज। कंपनी प्रॉपर्टी इज used for private purpose। Got it? तो इस केस में कंपनी का जो डायरेक्टर वन है वो जा रहा है ट्रिब्यूनल में, दैट इज ही फाइल्स अ केस इन ट्रिब्यूनल। एंड ट्रिब्यूनल inferred ये जो जजमेंट दिया वो यही था कि अगर दो डिफेंडेंट्स एंड दो प्लेंटिव्स हैं और तो द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी इज टू ब्रिंग एन एक्शन, बट अगर कंपनी के अंदर एक्शन लाने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब दो जन हैं और वही दो कंट्रोल में, वही दो प्लेंटिफ है और सॉरी वही दो शेयर होल्डर्स है, वही दो डायरेक्टर्स हैं, तो फिर दूसरा पार्टी अगर किसी पे ऑपरेशन करेगा तो डेफिनेटली आप एक्शन लेके आ ही सकते हो। तो यहाँ पे द जनरल प्रिंसिपल इज टू प्रिजर्व द सेंस ऑफ द कंपनी, इट वुड प्रिवेंट द एक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने फाइनली यही बोला कि given case the applicant is left with no scope and therefore action in law is feasible। Got it? पी जिसने ये केस फाइल किया था तो बस कोई चॉइस ही नहीं बची, therefore this action in law is, that was a case of Glass versus Atkins। सुटेबली एक पॉइंट के नीचे जो भी केस आपको रेफर करना हो डेफिनेटली रेफर करना टू मेक योर आंसर्स प्रॉपर, बिकॉज ये सब्जेक्ट में मैं आपको ये नहीं बोल सकता डोंट रेफर। ये सब्जेक्ट वैसा ही है, यू हैव टू रेफर केसेस, पनिशमेंट्स वगैरह सब रीड करना ही पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, कांट अवॉइड। चलो अनदर केस, बेली वर्सेस ओरिएंटल टेलीग्राफ कंपनी। इस केस में a shareholder can sue if an act requires a special majority but passed by simple majority। ये था इस केस का क्रक्स कि जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था वहाँ पे आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास कर दिया। दैट इज सिंपल और रिजिड formalities are to be observed if majority wants to give validity which purports to impede the interest of minority
An individual shareholder has a right of action to restrain the company from acting on a special resolution to which the insufficient notice is served. ये भी बोला गया है कि अगर कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशंस के लिए नोटिस सर्व बराबर से नहीं किए गए थे, इवन अ सिंगल मेंबर कैन स्टॉप अ रेजोल्यूशन पास होना। ओके, और ये आपने कंपनी लॉ के नोटिस के पार्ट में भी पढ़ा हुआ है। The members can take action if the notices are not properly served, unless the act of omission was not for a purposeful reason. तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखे आया, that was a case of Bailey versus Oriental Telephone Electric Company. That is, resolutions requiring simple majority cannot be passed, resolution requiring special majority only cannot be passed by simple majority. Also, special resolutions passed without proper notice can also be challenged. Okay? Special resolutions passed without proper notice can also be. ये था Bailey versus Oriental का. Okay, and thereafter personal action. Okay, well इसमें पहले भी ये नागप्पा वाला केस पढ़ता हूँ. It was observed, ऐसे लिखिए यहाँ तक. It was observed that individual shareholders is entitled to enforce his individual rights against the company, such as his right to vote, right to have vote recorded, right to stand as a director of the company at election. Okay, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपके इंडिविजुअल राइट्स अफेक्ट किए जाते हैं तो इन दैट केस दे इवन अ सिंगल इंडिविजुअल कैन गो टू ट्रिब्यूनल एंड आस्क हिज राइट टू बी इन्फोर्स्ड. आप ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं बोल सकते तू वोट नहीं कर सकता, तेरा वोट रिकॉर्ड नहीं होगा, यू कैन नॉट अटेंड द मीटिंग. अगर वो मेंबर है तो उसके मेंबर्स के राइट उसको एक्सरसाइज करने मिलने चाहिए. So that was Nagappa Chettiar versus Madras Race Club. Personal action can be brought
when members' rights are affected. Personal actions can be brought when members' rights are affected. एक ये केस था, दूसरा ये था सैमन वर्सेस क्विन एटसन. इस केस में क्या था? इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स कैन नॉट बी इन्वेडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर. He is entitled to all the rights and privileges appertaining to the status as a member. Individual shareholders can insist on strict compliance with the legal rules and statutory provisions. Provisions in the memorandum and the articles are mandatory and cannot be invaded by mere majority. The same line space, Salmon versus Quinn Edsons का केस, whereas आप members के rights को लेके infringe नहीं कर सकते. Majority cannot be invaded cannot invade on the rights of minors. Okay. Fine. So that was Salmon versus Queen Edsons का case. Then this one is called Daniels versus Daniels का case. Okay. That is the plaintiff who are minority of shareholders of the company. They brought action against two directors of the company and the company itself. In their statement of claim, they allege that the company, on the instruction of the two directors, where majority were shareholders, sold the company's land to one of the directors who were wife of the other at £4,250, and the directors knew or ought to have known the sale was at undervalue, because 4 years later, after the sale, he sold the same land for £1,20,000. The directors applied for the statement of claims to be dismissed and the abuse of the process of the court. So that was again a good exception and a rare exception. Daniels versus Daniels का केस क्या था? Each of the केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स डायरेक्टर एंड कंपनी पे केस फाइल किया. filed case for
Misappropriation. So they filed a case for misappropriation of the property. जिसके केस में केस ऐसा था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, दे वो ओनली 2 डायरेक्टर्स, और इन्होंने क्या किया कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कंपनी के एक डायरेक्टर के वाइफ को बेच दी, सोल्ड। at just a peanut price of 4,250 pounds। ठीक है, और इतना ही नहीं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टर्स मेजॉरिटी थे, एज अ मेंबर ऑल्सो ये वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो। तो इन्होंने रेजोल्यूशन अप्रूव भी कर दिया, प्रॉपर्टी को बेचने का रेजोल्यूशन। तो अप्रूव द सेल ऑफ मेजॉरिटी ऑल्सो। लेकिन इनका एलिगेशन क्या था कि ये जो $4,250 में आपने बेचा है, दिस इज फार मोर लेस देन द मार्केट वैल्यू। ओके, तो दिस वाज लेस देन द मार्केट वैल्यू, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि 4 years लेटर 4 years लेटर डायरेक्टर्स वाइफ जो है, डायरेक्टर्स वाइफ, he sold it at $1,20,000। तो 4 साल के बाद 1,20,000, सॉरी डॉलर नहीं, पाउंड्स 1,20,000 में बेचा गया। ओके, अब इन सब को देखते हुए जज he said minority can bring action against fraud minority can bring action against fraud, but if there is no fraud, if there is no fraud, then breach of duty by a director breach of duty by a director can be a ground to bring action against director।
can be a ground to bring action against directors. Therefore, minority can bring action against directors. करेक्ट। तो यहाँ पे ये जजमेंट अपने आप में यूनिक रहा। यूनिक इस सेंस में रहा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि फ्रॉड हुआ तो एक्शन हो सकता है, लेकिन पहली बार इधर के आर्ग्यूमेंट्स में पुटअप क्या किया गया, सर ये फ्रॉड नहीं है। क्या डायरेक्टर्स अगर अपनी ड्यूटी में ब्रीच करते हैं तो क्या वो ग्राउंड नहीं हो सकता? एंड द जज वाज लाइक एब्सोल्युटली हो सकता है, बट नोबडी वाज रेजिंग दैट ग्राउंड। गुड यू रेज्ड इट। एंड डैनियल्स वर्सेस डैनियल्स उस फेमस हुआ था कि अगर आप फ्रॉड साबित नहीं भी कर पाते कोई बात नहीं, जो फ्रॉड बोलना और साबित करना बड़ी बात है, तो एटलीस्ट प्रूव द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इफ यू कैन प्रूव द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, दैट्स मोर देन ओके। तो यूनिक केस था ये डैनियल्स वर्सेस डैनियल वी। एंड और कहाँ पहुंचे? ओके, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, बेनेट कॉलमैन का केस। बेनेट कॉलमैन का केस डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया था, और उन्होंने क्या बोला कि द कंपनीज एक्ट आर इंटेंडेड टू अवॉइड winding up of company if possible and keep it going while at the same time relieving the minority shareholders from operation mismatch from being conducted in a manner prejudicial to the public interest. Thus, the court has wide powers to supplant the entire corporate management by resorting to non-corporate management, which may take the form of appointing administrator or special officer or a committee of adversaries who will be in charge of the affairs of the company. यहाँ पे बेनेट कॉलमैन केस में कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस कुछ दिए। कोर्ट जनरली बोलना चाहते, देखो वाइंडिंग अप जैसी बड़ी चीज ये लास्ट ऑफ द लास्ट रिसोर्ट हो सकती है, पर अभी नहीं। अगर एक कंपनी में आप साबित करते हो कि बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, तो इन दैट केस उसके लिए हम कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। कोर्ट के पास उतनी ताकत है। इन दैट केस हम कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडवाइजर्स वगैरह अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन पूरी कंपनी को बंद कर देना एज इफ यू आर किलिंग द एंटिटी, दैट इज नॉट फीजिबल। ओके, तो बेनेट कॉलमैन का केस उसमें एक फेमस हुआ था, बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी। Bennett and Coleman. Case of oppression and mismatch. ऑपरेशन। यहाँ पे जज ने क्या बोला था? जज ने बोला वाइंडिंग अप कंपनी इन ऑपरेशन एंड मिसमैच। In operation and mismanagement is a last option. Relief can be given to minority shareholders
relief can be given to minority shareholders, and the management can be given to committee or administrator so that company remains going concern. The company remains as going. तो ये बेनेट एंड कॉलमैन केस, ठीक है. वाइंडिंग अप इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन बट द लास्ट ऑप्शन. तो यहाँ तक होते होते चैप्टर 1 खत्म हुआ, ठीक है. अब एक चीज़ बता दूँ, ये स्टार्टिंग का चैप्टर छोटा छोटा ही है क्योंकि ये सब वो 240 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्लास एक्शन से रिलेटेड. You're on